After understanding the basics of computer and some features, now let's see some classification of computer. See, in the classification part, I have different things, different options, that classification on the basis of based on purpose, then based on data handling, and based on size and functionality. So based on purpose, I have two types, that is general purpose and for specific purpose. Based on data handling, further divided into analog and digital, and the third one is hybrid. The main one, that is based on size and functionality, we have microcomputers, mini computers, mainframe, and supercomputers. Let's discuss these all one by one. First of all, we have microcomputer. Microcomputer is the smallest, least expensive of all the computers. They have smallest memory and less power. These computers are also known as PC, that is personal computers. The most common type of microcomputer is desktop computer. Some examples are desktop, laptop, notebook, computers, etc. Next is the mini computers. So these are general purpose computers, smaller than our mainframe computers. इनका जो साइज है वो मीडियम होता है और अप्रोक्सीमेटली इतना साइज ऑफ एरिया ये ऑक्युपाई करती है. स्लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे की जो सेशंस है उसमें कवर अप करेंगे. स्मॉलर बैकअप स्टोरेज, लिमिटेड हार्डवेयर एंड लेस मेमोरी देन मेनफ्रेम्स. Mainframe computers, it is also slower, less power, less expensive than supercomputers. So very large in size. See, it is the example of mainframe computer. Mainframes are used by banks and many more business to update inventories. So these are some examples of mainframe computers. Next are the supercomputers. Supercomputers are the fastest, most powerful, most expensive. It has the ability to recover automatically from failures. So जो सुपर कंप्यूटर्स हैं बेसिकली हम कहते हैं कि इनको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं दीज आर यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस और प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा. So one of the most powerful supercomputer today is this, and these are some other names of supercomputers. Now here is the summary on the basis of size, that supercomputer, these are the characteristics, that largest, fastest, powerful, most expensive, used for advanced scientific research. Mainframes are less powerful and less expensive. It is used to handle all kinds of problems, whether scientific or commercial. Mini computers are smaller, and the name, used in scientific laboratories, research institutions, engineering plants. Microcomputers are also smallest, cheapest, and relatively least powerful. So these are used for a variety of tasks. Now next is the category of, that is based on work. So on the base of work, we have three types. First is the analog computer. In analog computer, we have speedometer, odometer, seismograph, etc. In digital computers, it comes with the 0-1s forms, like everything is now comes in the digital form, like digital watch, etc. Hybrid computer are the mixture of both this analog and digital computer. So one of the example of this hybrid is, that is ECG, electronic cardiograph. Next, based on the purpose, we have two types. The first is general purpose computers. General purpose computer can perform any kind of job with equal efficiency. Special purpose is one that is designed to perform only one special task, as the name applies. General means can do any type of work, but special means can do a single task, or you can say the program or instruction set is permanently stored in such a machine. Now comes the applications of computer. जैसे कि today's environment की अगर हम बात करें, so
हर फील्ड में कंप्यूटर जो है वो यूजफुल है. So let's discuss some applications of computer. The first is the education. In the field of education, computer plays a very important role. Like nowadays, आप देख सकते हैं जैसे ड्यू टू कोरोना स्टूडेंट की जो क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन चल रही है. तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. इसमें हमारे पास CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शंस, ये सब इंक्लूड है. Entertainment, for entertainment is the main application of computer that आप लोग इसमें गेम्स खेल सकते हो, तो गेम्स प्ले कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, लाइक सॉन्ग सुन सकते हो, तो ये सारी एंटरटेनमेंट में आ जाएगी. साइंस, लाइक फॉर रिसर्च पर्पसेस हम इसको यूज कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. सो एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन है. पब्लिशिंग, सो पब्लिशिंग की फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लाइक आप देख रहे हैं ई बुक्स की फॉर्म में जो हमें डाटा आजकल अवेलेबल है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिशिंग. एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कंप्यूटर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट आर कंप्यूटर फॉर एनालाइजिंग द एग्रीकल्चरल डाटा. सो एनालाइज करना चाहे, लाइक अगर कोई भी जो उनकी फसलें हैं उनसे रिलेटेड कुछ चेक करना चाहते हैं, या कोई जो चीज उनकी फसलों के लिए अच्छी हो, तो वो सब चीजें भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दे कैन एनालाइज. गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है? गवर्नमेंट रन्स द कंट्री बाय मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइड सिटीजंस विद अप टू डेट इंफॉर्मेशन. सो आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट की भी सारी पॉलिसीज हैं, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिसी जितनी भी है इनकी वेबसाइट्स पे है. सो वेबसाइट्स किसके थ्रू देख पाते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू. तो अब होम हमारा जो घर है, आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है. कंप्यूटर एक तरह की नीड बन गया है, चाहे एजुकेशनल टूल कह लीजिए आप, या फिर आपने लेटर्स लिखने हैं, आपने रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं, मूवीज देखनी है, इंटरनेट चलाना है, तो हर एक टाइप की जरूरत की लाइक एक जो है कंप्यूटर बन गया है कि कंप्यूटर से हम ये सारे काम इजिली कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सी कंपोनेंट्स मींस कि लाइक किन किन पार्ट से जो है हमारा कंप्यूटर बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल we have three main parts, that is the input unit, or you can say input devices, output unit or output devices, and CPU that stand for central processing unit. And here is the simple diagram of components. Like here's the input unit, then output, and this whole is the CPU. So it consists of control unit, ALU, memory. So we will discuss all this in detail. Now first of all we have input devices, or you can say input unit. So computer will only respond when a command is given to the device. जिन सोर्सेज की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो आई विल यूज कीबोर्ड, या फिर मुझे कर्सर को मूव करना है तो मैं माउस यूज करती हूँ. तो यही चीजें क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. लाइक यही कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. कीबोर्ड से आप एंटर कर रहे हैं नेम एंड कैरेक्टर्स, और एग्जांपल्स है बारकोड रीडर्स, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर्स, so touch screens. So these are different examples of your input devices. Here are some more examples of input devices, and these are the pictures of some input devices, that keyboard, mouse, joystick, trackball, microphone, webcam, touch screen, scanner. So these are some important input devices. Next is the output devices. So जब हम लाइक कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, लाइक कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रही हूँ, लाइक मैंने टाइप किया, सो वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा? दैट इज द आउटपुट. जो रिजल्ट है वो कैसे डिस्प्ले होगा, कहाँ डिस्प्ले होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस. जैसे लाइक व्हेन वी विजिट एन ATM, हम लोग अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, तो क्या होता है? फाइनली आपके पास मनी आ जाती है, तो दैट इज द आउटपुट. Some output devices are there, that is the monitor, plotter, printer, speaker, headphones, projector. So these are the example of output devices. Now let's discuss some output devices which are important. So first is the monitors.
Monitor is very popular and most commonly used output device. Monitor consists of a screen, electronic components that produce the output on the screen for a temporary period. So most monitors use personal computers, display text, graphics and video information. Second time is plotters. प्लॉटर्स जो होते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक जो बड़े बड़े बैनर्स डिजाइन किए जाते हैं उनको जो प्रिंट निकाला जाता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स ही किया जाता है. स्पीकर, हमें सॉन्ग सुनने हैं तो साउंड के लिए हम स्पीकर को यूज करते हैं. प्रिंटर, जब कभी भी कोई भी चीज आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए सो हम उसको यूज करते हैं प्रिंटर्स के. प्रिंटर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, second is the non-impact printers. So impact printers prints characters, graphics on the paper with the strikes of hammer on a repeat. Like example, typewriter. Typewriter है वो इसका example है impact printer का. So non-impact printer क्या होते हैं? The printers that produce the output on a paper. जो पेपर पे प्रिंट करते हैं without striking the paper. जैसे कि इनके कुछ फीचर्स हैं, ये फास्टर होते हैं किनसे? इम्पैक्ट प्रिंटर से. क्वालिटी अच्छी होती है, कोई नॉइज नहीं आता जब हम प्रिंट करते हैं. इनके जो एग्जांपल है दैट आर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स एक्सेट्रा. और इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल था हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर. नेक्स्ट इज द डॉट मैट्रिक प्रिंटर. इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप बोलते हैं. So dot metric printer makes a hard copy by printing one character at a time. Non-impact is further divided into different parts. That is the inkjet printer, laser printer. So because जो inkjet printers हैं इनको inkjet इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ना स्प्रे करते हैं इंक इस पे पेपर के ऊपर. So they being of non-impact type, they cannot be used to produce multiple copies. बहुत सारी कॉपीज नहीं आती है एक प्रिंटिंग में. सो लेजर प्रिंटर इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट है, हाई क्वालिटी है. बट जैसे कि इसने फास्टेस्ट भी दिया, क्वालिटी भी अच्छी दी, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मोस्ट एक्सपेंसिव. नाउ सेकेंड कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज आफ्टर डिस्कसिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट और आउटपुट यूनिट्स, देयर इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is also known as the brain of computer as it controls operations of all parts of computer. It consists of two components, that is the ALU and control unit. CPU में ये हमारी main चीज consist होती है. ALU stands for arithmetic and logical unit and here control unit. And here is the memory. So now CPU, memory unit. When once a user enter data with the help of input device, कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्टोर करवाता है. कहाँ पर? मेमोरी यूनिट में, ताकि अगर मुझे बाद में जरूरत हो तो मैं इसको यूज कर सकूं. तो ये जो स्टोरेज है हम इसको टू टाइप से करा सकते हैं, या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी. परमानेंटली कराना है तो मुझे उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करने हैं, और अगर टेम्परेरी कराना है तो उसके लिए तो हमारे पास रैम है ही. ALU, as the name implies, is basically used for mathematical calculations like addition, subtraction. Control unit will control all the tasks, like it is responsible for coordinating tasks between all the components of computer system. Now, the computer memory. Memory consists of many parts. We have three parts. First is the primary, secondary, second is the secondary, and third is the cache memory. Primary further divided into two parts, RAM and ROM. Secondary further divided into these parts. So now let's discuss these types of memory one by one. First of all, we have primary memory. So जो प्राइमरी मेमोरी है बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि डाटा जो भी काम चल रहा है, लाइक इट होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर करंटली इन यूज, जो करंटली वर्किंग में होगा. और जैसे ही डाटा लाइक आपका लॉस हो जाता है, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है. सो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं, दैट इज रैम और रोम, वो इसकी कैटेगरी में है. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक
ये एक फीचर है इसका, वोलेटाइल मेमोरी। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी नोन एज मेन मेमोरी। डाटा लॉस हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है। फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। तो आपकी मशीन में प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नाउ फर्दर प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज द RAM, random access memory, and ROM, read-only memory. Now RAM. RAM stands for random access memory. Basically fastest है, memory available होती है इसमें, but expensive है ये. So RAM में बस ये जो disadvantage है that is कि for some time, like limited period के लिए होता है, जब तक पावर चल रही है तब तक डाटा सेव रहेगा, अदरवाइज डाटा क्या होता है आपका इरेज हो जाता है. So RAM की भी दो टाइप्स हैं, SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है, और आप ये कह सकते हैं SRAM जो है कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जबकि DRAM जो है उसमें 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर होता है. तो ये पूछा जा सकता है कि DRAM किससे बना होता है, विच स्टोर बिट 1 bit of data. So due to small size of each cell, one DRAM can have large number of cells. ROM is read only memory. तो नेम से जैसे पता चल रहा है कि सिर्फ रीडिंग के लिए यूज किया जाता है. Data to be stored into ROM is written during the manufacturing phase itself. So ROM is slower, hence cheaper than RAM. इसमें डाटा रहता है, it retains its data even when power is switched off. So that's why हम ROM को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जबकि जो RAM है वो volatile. Now the different types of ROM, that is PROM, EPROM and EEPROM. So इनकी full forms कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में. That is PROM stands for Programmable Read-Only Memory. EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM stands for Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Now a small difference between RAM and ROM. RAM basically stands for Random Access Memory and Read-Only Memory. It is used to read data quickly, run applications, and ROM basically for storage. Volatile है, ये non volatile है. Types जो है इसकी static और dynamic RAM है, और हमारे पास ROM के 3 types हैं, that is PROM, EPROM and EEPROM. Next comes to the secondary memory. Secondary devices means कि जब आप डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करा के रखना चाहते हैं, सो ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है. और नॉन वोलाटाइल है तो दैट मीन्स परमानेंटली स्टोरेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. फर्स्ट इज द हार्ड डिस्क. सी हार्ड डिस्क आपको पता है कि आपकी मशीन में भी होती है, और आप एक्सटर्नल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं. सो नॉन वोलाटाइल है क्योंकि परमानेंट स्टोरेज रहेगा. कहाँ पर होती है आपकी मशीन पर होती है.